हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 4 ईवीएस का चैप्टर नंबर 4, दैट इज ग्रोइंग अप विद नेचर के क्वेश्चन आंसर। अगर आपने इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है सो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट एंड देन डू द क्वेश्चन आंसर। चलिए बढ़ते हैं। लेट्स सी आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन। राइट द नेम्स ऑफ 5 कलरफुल फ्लावर्स इन योर एरिया। आप देखो कि आपके एरिया में कुछ ऐसे 5 फ्लावर्स के नाम लिखने जो आपके एरिया में ग्रो करते हैं, ठीक है। एंड यू हैव टू राइट द नेम इन योर ओन लोकल लैंग्वेज। ना आप तमिल बोलते हो तो तमिल में उस फ्लावर्स को क्या बोलते हैं, ठीक है। अगर आप राजस्थान में हो और या फिर आप कहीं किसी भी एरिया में हो, आप महाराष्ट्र में हो, सो व्हाट यू कॉल these flowers in your own local language, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस पलास इज कॉल्ड केसुदा इन गुजरात, ठीक है। अब देखो इस पलास को गुजरात में केसुदा बोलते हैं ना, लाइक दैट। आप अगर किसी और स्टेट से बिलोंग कर रहे हो देन व्हाट इट इज कॉल्ड इन योर ओन लोकल लैंग्वेज, ठीक है। सो आई ओनली नो हिंदी, सो I can list just 5 names of the flowers and what it is called in Hindi. I don't know any other language. So, like rose. Rose को हिंदी में हम क्या कहते हैं? गुलाब. Marigold in Hindi we call it as a गेंदा फूल. Hibiscus called gudhal. Jasmine it is chameli. पलास in Gujarat it is known as a केसुदा और हिंदी में इसे पलास ही कहते हैं, ठीक है। Next, activity 2. Make the model of a house using materials from nature such as a clay, wooden sticks, hay, grass, leaves, etc. आपको एक मॉडल हाउस, एक छोटा सा मॉडल हाउस आप बना सकते हैं यूजिंग दीज नेचुरल मटेरियल्स। लाइक क्ले का यूज कर सकते हो आप, वुडन स्टिक्स, कुछ ग्रास, लीव्स, इन सब का यूज करके आप एक छोटा सा एक घर बना सकते हो, ठीक है। डेकोरेट इट विथ एन आर्ट फॉर्म ऑफ योर चॉइस। आपको इस घर को डेकोरेट करना है किसी आर्ट फॉर्म से। लाइक वी हैव लर्नड इन दिस चैप्टर अबाउट द गोंद आर्ट ना, हमने गोंद आर्ट के बारे में पढ़ा। सो यू कैन, देर आर मेनी अदर फॉर्म्स ऑफ आर्ट लाइक मधुबनी पेंटिंग और वर्डली आर्ट। आप किसी भी एक आर्ट फॉर्म को लो एंड ट्राई टू डेकोरेट योर हाउस विथ एनी ऑफ दीज आर्ट फॉर्म, ठीक है। So you can do this by your own. Moving to the next question, activity 3. Let us prepare a natural dye. So during the explanation, I have taught you how to prepare a natural dye. आपको क्या करना है? Firstly, you have to collect some flowers, leaves, barks, root like a beetroot. आप कुछ flowers collect कर सकते हो like a hibiscus, marigold. कुछ leaves collect कर सकते हो so that you will have the different colors of the natural dye. ठीक है, आपके पास बहुत different colors के natural dye prepare हो जाएंगे. Now you have to boil it separately in 1 to liters of water for 30 to 60 minutes के लिए आपको बॉईल करना है, ठीक है। इन सारे मटेरियल्स को अलग अलग कंटेनर में। आफ्टर दैट यू हैव टू स्ट्रेन द लिक्विड ना, आपको छान लेना है इस लिक्विड को एंड रिमूव ऑल द प्लांट्स मटेरियल ना, जितने भी सॉलिड पार्ट्स हैं उसको आपको रिमूव कर देना है। नाउ यू विल हैव द लिक्विड and this colorful liquid is your natural dye. So ये जो colorful liquid बचा ना, it is a natural dye, ठीक है। Now you can use this dye to paint on a piece of a cloth ना, अपने कोई भी आपका हैंकरचीफ हो या फिर कोई भी आपका piece of a cloth है, then you can use this paint to natural dye to paint on that piece of a cloth. You can use it to dye your cloth. आप अपने पूरे ड्रेस को कलर कर सकते हो इससे। Note that you need to soak the cloth overnight. So suppose you have prepared the dye and you have a white color cloth. ना आप उसे कलर करना चाह रहे हो, so soak it in that dye for overnight ना, पूरी रात आपको छोड़ देना है। next day squeeze it and dry it in the sun, ठीक है। so this way you can have your dye prepared and you can color your cloth. Next, activity 4.
Find out some traditional ways of preserving grains. ना आपने देखा था ना कि कैसे लोग कैसे अपने grains को preserve करते हैं by different methods like by storing it in the earthen pots, bamboo basket, and vegetable at your place. So you have to find some traditional ways of preserving grains and vegetable at your place. So आप देखो कि आपके घर पे या आपके घर के आसपास लोग कैसे अपने grains को vegetables को preserve करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप उत्तराखंड में देखोगे तो वो लोग क्या यूज करते हैं, दे यूज टुमरी. सो टुमरी क्या है? It is constructed with a round or oval shaped dried bottle gourd. So जो bottle gourd होता है ना वो जब सूख जाता है, so they use it as a container. वो काफी सूख कर वो हार्ड हो जाता है. So they remove all the inside material, जो भी अंदर का जो बीज वगैरह होता है ना, they remove it and they use this as a storage. वो storage के लिए यूज करते हैं for storing the grains. Even they use as a storing the water also. Okay, so this is called tumri. So like that, just आप अपने आसपास देखो कि how the people store the grains and vegetables. ठीक है? For example, uh, earthen pots. Now, earthen pots is used in Rajasthan. It is very commonly used in Rajasthan to store the grains. क्या यूज किस लिए यूज करते हैं? टू स्टोर द ग्रेन्स दे यूज अर्दन पॉट इन राजस्थान. राजस्थान में अर्दन पॉट्स यूज करते हैं. देन इन असम बैम्बू बास्केट्स आर यूज्ड. ना असम में बैम्बू बास्केट्स यूज करते हैं एंड इट इज कोटेड विद द काउ डंग. उसका जो बाहर का जो लेयर होता है ना, इट इज कोटेड विद द काउ डंग so that it can be prevented from the attack of the insect. Insects वहाँ attack नहीं कर पाएंगे ना. So these bamboo baskets are used to store the grains. In Kerala, wooden boxes are used. Okay, wooden boxes are used and it is used as a storage container. They use store their grains, vegetables. Okay. In Punjab, they use metal drum. ना metal के drums होते हैं and they are airtight drum for storing the grains. So वो क्या करते हैं? They store their grains in these airtight drum. So these are the different containers used in the different states for storing their grains and vegetables. Okay. Next, this is activity 5. Discuss with the elders in your family and write the name of the plants, its parts and its uses in the table given below. So आप अपने elders से, अपने parents, grandparents से आप discuss कर सकते हो कि what are some of the natural home remedy we use. सो आप बात कर सकते हो कि हम कौन से ऐसे प्लांट्स या उसके पार्ट्स यूज करते हैं ना, किस बीमारी में कौन से प्लांट्स यूज करते हैं. एंड दीज आर द वेरी कॉमनली यूज्ड इन आवर होम्स. हमारे घर में बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं ये सारे प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स, और हम काफ़ी यूज़ करते हैं. सो यू कैन आस्क योर पेरेंट्स, like for example Indian basil, ना तुलसी. So I guess everyone knows this tulsi plant. So इसके leaves को हम use करते हैं to treat cough and cold. ना whenever we have a cough and cold, we use this tulsi leaves. Carom seeds, ना in Hindi we call it as a azwain. ठीक है? So this seeds is very useful in the digestion. So if you have some issue related to digestion, you can have some ajwain seeds. Okay. Then neem leaves. So neem is also widely used uh, for skin problems, to keep the insects away. Na? Then these neems twigs, ना दातून भी हम इसका बनाते हैं and it is used for our dental care. ठीक है? Aloe vera. The leaves of the aloe vera are used for the skin care. Turmeric. The roots are used
the turmeric roots are used and it is used as a medicine and also it is used as a spice की तरह भी हम use करते हैं हल्दी को. So you can write the name of the plant, you can ask your parents and if they tell you some more you can write. Okay. Now next, what things should be kept in a first aid box? आप देखो हर किसी के घर में एक first aid box होता है. So just open the first aid box and check what are the items we have kept in the first aid box. So generally you will find that we keep some bandage, we keep some cotton, antiseptic lotion, adhesive tape, scissors, pain relief ointment, thermometer, basic medicine ना बहुत basic medicine like a fever ना stomach pain और vomiting. So ये सारे basic medicines भी हम रखते हैं. ORS, mosquito repellent, hand sanitizer. So all these are the uh, items which we keep in our first aid box. ठीक है? Next, why do you think providing first aid is important if someone gets injured? So आपको क्यों लगता है कि फर्स्ट एड हमें प्रोवाइड करना चाहिए जिन लोगों को थोड़ी इंजरी हो गई है. सो डॉक्टर से जाने से पहले हम थोड़ा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं यूजिंग दिस फर्स्ट एड बॉक्स. सो व्हाई डू यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट? So the first aid gives immediate help to an injured person. So अगर किसी को इंजरी हुई है they must visit the doctor, but before visiting the doctor immediate help, immediate treatment should be provided to the injured person. ठीक है, हम immediate help provide कर सकते हैं injured person को. ठीक है, so that it can prevent the injury from becoming worse. So if you provide the immediate help तो क्या होगा, injury बहुत ज़्यादा worse नहीं होगा. Okay, until the medical help arrive. So medical help आने में थोड़ा time लग सकता है. So in that time you can provide the treatment, you can provide the first aid treatment. Okay, so that injury doesn't become worse, बहुत ज़्यादा खराब नहीं हो गई injury. Okay, so that's why the first aid is important to give to some injured people. ठीक है. Next, activity 6, फाइंड आउट द ट्रेडिशनल डांसेस एंड सॉन्ग्स ऑफ योर रीजन. सो अब देखो कि इंडिया में हर स्टेट का एक अपना ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है, अपना कुछ ट्रेडिशनल सॉन्ग्स हैं. सो ट्राई टू फाइंड द ट्रेडिशनल डांस और सॉन्ग्स विच इज़ पॉपुलर इन योर रीजन and perform a traditional dance with the help of your classmate and teacher for the annual day of your school. So आप इस ट्रेडिशनल डांस को, सॉन्ग को आप अपने एनुअल डे फंक्शन पे भी परफॉर्म कर सकते हो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप देखो कि इन आसाम बिहू डांस इज फेमस इन आसाम ना, आसाम में बिहू डांस फेमस है. Then Kolatham and Lambadi dance is very popular in Telangana and Andhra Pradesh. So like every state has its own traditional dance, songs. So try to get information about this dance कि आपके रीजन में कौन सा डांस या सॉन्ग फेमस है. Okay? So in every region we have these folk songs ना, लोग folk song अपना traditional local folk songs गाते हैं. So try to find all these from your elders. Okay, you can talk to your elders and find out this. Next, imagine if there is no electricity in your area for 2 days, what changes will you see in your life? So suppose करो कि आपके घर में 2 दिन के लिए लाइट नहीं है. So what changes you will see in your life? So lights and fan will not work. Na? You have to sleep without light and fans. Mobile phones can't be charged. Na? Don't have electricity, so you can't charge your phone. Television, computers cannot be used. ना हम तो टीवी, लैपटॉप कुछ चला नहीं सकते. Water pumps may stop working.
So if water pumps will stop working, so we'll not get water in the taps. Na taps में तो पानी नहीं आएंगे. So then we have to move to the hand pumps, right? So life will become very difficult. So we should wisely use the electricity. So nowadays electricity is so important to us. Na electricity काफी important है. And so we should use it wisely. We should not waste this electricity. Next, activity 7. Talk to your elders and find out the ritual in connection to animals and plants which are celebrated in your locality. So आप अपने elders से बात कर सकते हो, अपने parents से, grandparents से, and try to find out is there any ritual or any festival which you celebrate and it is connected to plants and animals. So ऐसा कौन सा festival आप celebrate करते हो which is connected to plants and animals. ठीक है? So try to find with your elders. ठीक है? For example, Wat Purnima. So Wat Purnima is a festival, and in this festival, banyan tree is worshipped. Okay, banyan tree is worshipped. Hari Jiroti. So this is again a festival where the fruit bearing trees, acid trees, जिनके फल लगते हैं, it is planted. Okay, in this festival, fruit bearing trees is planted. हम acid trees लगाते हैं जिनमें fruits होते हों. ठीक है? काजीरंगा Elephant Festival. So, it is a festival in which we create awareness about the elephant के बारे में हम awareness create करते हैं लोगों के बीच. So, that don't harm these animals. Okay? Like that, you can find some more festival which is celebrated in your locality. आपके घर में ऐसे कौन से festival celebrate किए जाते हैं? So आप देखो कि there are some festival which are celebrated in different parts of the country like Nag Panchami. So it is a festival in which we uh, worship snakes. ना snakes की पूजा होती है. Okay, so it is worshipped for their protection. Okay, then Pongal. So Pongal is a festival, and in this, uh, cow is worshipped. Okay, cow is worshipped. Tulsi Viva. Tulsi Viva is a festival in which the Tulsi plant is worshipped. Okay, so these are some festival which are associated with the plants and animals. Now, let us reflect. What are the things that we use from nature in our daily life? तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम नेचर से हमें मिलता है and we use it in our daily life. Okay, so for example, eating. So eating, what are the things which we eat and we get from the nature? So we get fruits, we get vegetables, we get grains, we get water, right? All these we get from the nature. Clothing. So for clothing, what are the things we get from the nature? So we get cotton, wool, silk, jute, all these we get from the nature. Health care. ना हमारे हेल्थ केयर के लिए आप देखो बहुत सारी ऐसी नेचुरल medicines available है which you can get from the plants and animals. So like a neem, tulsi, aloe vera, ajwain, and many more are there. Any other items like wood? No, we get wood from the nature, and the wood has multi-purpose use. You can use to build house. You can use this as a fuel. You can use this for the furniture. We get flowers, we get paper, we get fuel from the nature. ना आप देखो, we get sunlight, and the sunlight can be converted to electricity using the solar panel. ना solar panel का use करके हम इसे electricity में convert कर सकते हैं. And this is a fuel. We get petrol, diesel, ना coal, everything we get from the nature.
Next, what challenges arise when we overuse natural resources? So अगर आप natural resources का overuse करोगे तो क्या होगा? So overusing natural resources leads to shortage ना. अब किसी भी natural resources का अगर overuse होगा, there will be a shortage, pollution, loss of forest, soil degradation, and harm to plants and animals. So let's see one by one. So if we overuse wood from the nature, अगर हम nature से wood का overuse करेंगे, then our forest deplete ना, forest कम होते चले जाएंगे, it will deplete, कम होते चले जाएंगे forest हमारे. वाटर का अगर ओवर यूज करेंगे, देयर विल बी अ वाटर स्कैरसिटी एंड ड्रॉट में आकर ना सूखा आ सकता है. सॉइल, if we overuse the soil will lose the fertility na? The soil fertility will decrease and erosion increases. Sea products, so if we overuse the sea products, then the fish and other marine life may reduce ना, इनके numbers कम हो जाएंगे. Any other like a forest products, if you are using a lot of a forest product, then it will lead to deforestation and loss of wildlife. So if we are overutilizing the forest products or wood, so we are cutting the trees, there will be a deforestation, and if there is a deforestation, the wildlife will lose their habitat, उनका घर नहीं होगा, and they will also die. ठीक है, so deforestation and loss of wildlife habitat will occur. So if forests are there, then we have the animals. If forest is not there, then we will not have any animals. Okay? Because they lose their home and they will die. How can we protect the natural environment around us? So हम अपने आसपास के नेचुरल एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल एट होम, एट स्कूल, इन पार्क, in our locality. So how we can protect these natural environment around these places? So we can do some things like at home आप घर में क्या कर सकते हो? Try to save water and electricity ना, don't waste this water and electricity. Keep surrounding clean. Plant trees and take care of the plants. Try to plant some trees and take care of these plants. At school, what you can do? Use dustbin. Do not waste paper. Hmm. Keep classroom and school grounds clean. ठीक है? In park. Parks में आप क्या कर सकते हो? Do not litter. ना? Do not make the park dirty. Protect plants and trees. ठीक है? आपको plants and trees को protect करना है. Try to uh, take care of these plants and try to grow more and more plants. Use dustbin for waste in your locality. So keep roads and public places clean. Plant more trees. ना ज़्यादा से ज़्यादा आप पेड़ लगा सकते हो. Avoid using plastic bags. Try to avoid the use of the plastic. So these are the things you can do at your home, at school, at your park, in locality. Next, design your herbal garden. So here is a space for your herbal garden. So this is a space given for the herbal garden. Draw pictures of your favorite herbs in different parts of the garden and write down their names. So आपको pictures draw करने हैं of your favorite herbs ना. So we have different types of herbs which you can easily grow in your garden, right? Like tulsi, mint, aloe vera, neem, hibiscus, curry leaves, aloe vera, tulsi, lemongrass ना. So all these are the herbs which you can easily grow. So you have to draw the picture of your favorite herbs and write the names. Are there some herbs that you like less?
सो कुछ ऐसे हर्ब्स हैं क्या जो आप नहीं लाइक करते हो? फॉर एग्जाम्पल नीम काफ़ी कड़वा होता है, इट्स हैव अ बिटर टेस्ट. ओके, सो लाइक दिस यू कैन राइट. So draw the your favorite herbs here. So with this we have completed all the question answer of this chapter. So if you have any doubt, please ask your question in the comment. And अगर video useful लगा हो, so please uh, like the video and subscribe to the channel. See you in the next class. Till then, bye. Take care.